स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने। Is construction and demolition waste being thrown on your streets, parks, and water bodies? Is the air near you being polluted? Is there no solution? No hope? There are solutions. Delhi is a great example of how to deal with this growing menace of construction and demolition waste. In the last decade, Delhi and the National Capital Region has seen extensive construction activity. As the infrastructure of the city grows, so does the construction and demolition debris. Well, C&D waste, if it is not properly managed, could create dust, which is very detrimental for human health. And with dry kind of environment, like in Delhi, for example, it goes inside our lungs and it creates a lot of diseases, because these are long-term exposures. The quantum of C&D waste exponentially increased during the large-scale construction of the Commonwealth sports facilities during 2007 to 2010. It was during this period that the municipalities and the Delhi government decided to look at possible solutions before the debris ended up being thrown in different parts of the city. As a result of the crisis being created by C&D waste, Delhi's first plant was commissioned. This was the initiative of the erstwhile Municipal Corporation of Delhi and a private company, IL&FS, through a public-private partnership. जो लैंड है वो एमसीडी के द्वारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। उसके बदले में जो हमारा जो सीएनडी वेस्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है वो वहाँ से लिफ्ट करते हैं। केवल कार्टेज फ़ी जो है वो IL&FS को नॉर्थ एमसीडी देती है, उसकी प्रोसेसिंग फ़ी कोई हम पे नहीं करते। इस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को ये लोग प्रोसेस करते हैं और इससे वेरियस रिसाइकल्ड मटेरियल जैसे कि टाइल्स है, स्टोन एग्रीगेट है, सैंड है, वो सब बनाया जाता है, जिसको ये प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसीज को जैसा भी इनकी मार्केटिंग है उस हिसाब से बेचते हैं। This plant was one of the main reasons that Delhi was able to recycle the massive quantities of construction debris being generated during the run of the Commonwealth Games. लगभग आज की डेट में 2000 मैट्रिक टन जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इस साइट पे आता है, जिसमें से लगभग 750 टन जो मटेरियल है वो नॉर्थ एमसीडी का है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का, PWD का या और कोई डिपार्टमेंट भी जो है वो अपना CND जो वेस्ट है वहाँ पर डंप करते हैं। 2009 से अभी तक लगभग 30 लाख मैट्रिक टन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इस प्लांट पे प्रोसेस हो चुका है। तो आप ये मानिए कि ये प्लांट जो है वो केवल 4 एकड़ की ज़मीन पर है, बुराड़ी जहांगीरपुरी में हमने लगा रखा है। लेकिन अगर ये प्लांट ना होता तो उस 30 लाख मैट्रिक टन को डंप करने के लिए लगभग 60 एकड़ ज़मीन हमें आज चाहिए होती।
Located in the northern end of the city in Burari, the plant is a unique one. Hundreds of tons of C&D wastes are trucked for recycling from more than 100 designated construction and demolition dump sites across the city. This plant, when commenced its operation during December 2009, was recovering around 22% of just concrete and bricks. On successive developments, we at present are recovering almost 98 to 99% reusable material, which of course we are billing and sending to the end users. These trucks are making their way inside the Burari C&D plant, where they will be weighed. At the weighing machine, a quick inspection is also conducted to check the size and quality of C&D waste being received. The details of the truck, location from where the debris originated, overall weight are all entered into the system. Once completed, the truck then goes to the C&D dumping site adjacent to the plant. Here the big boulders are broken into pieces both manually and through machines to suit the specification of the plant. The malba is then fed into the machines for processing. The Burari C&D plant recycles C&D waste by two processes, dry and wet. In the wet process, only bricks are fed into the system. Water is sprinkled continuously to make the waste bricks wet before it goes into the system. जो मलबा रहता है उसमें ब्रिक्स पे मिट्टी चिपकी रहती है, उसको अलग करने के लिए हमें उसको वॉश करने की ज़रूरत रहती है और वॉश करके फिर उसको रिसाइज करके हम लोग मशीन में फीड करते हैं। फीड पॉइंट पर जो वाइब्रो फीडर है उसका अपर्चर साइज 60 mm है सर। Both material which is less than 60 mm and which is greater than 150 mm after crushing goes directly onto the static conveyor. उसमें wood रहती है, thermocol particles रहते हैं, rags रहते हैं, उनको manually pick करके अलग कर देते हैं। After that all the malba goes onto the prograde screen. ऊपर जो top deck है that is prograde screen. Prograde screen पे continuous water nozzles are there to wash it properly. Top deck is of 26 mm aperture. Malba which is less than 26 mm goes down through the aperture. उसके नीचे एक 10 mm का sieve लगा हुआ है, तो 10 to 26 mm sized material gets captured over there and comes out by a mobile conveyor. After segregating material up to 3 mm, what is left is sand mixed with silt in form of slurry. Through the process of EVO wash and aqua cycle, sand is separated from the silt and is collected in the plant. The residue left has both silt and water, from which water is separated and recycled through the plant. All the moisture is squeezed from the leftover slurry through the process of filter press, leaving behind silt which can be used in agricultural land. The stones and boulders received at the plant as C&D waste are recycled using dry technology. This plant is comparatively smaller than the wet facility, but with a much bigger role in the entire cycle of C&D waste management. कंक्रीट ब्लॉक्स एंड रॉकस्टोन यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। उसके बाद एक बैको लोडर आता है, बैको लोडर अपने लोडर में लोड करता है उसको, और एक उसका VS60 RM60 के फ्रंट में एक VS60 वाइब्रो स्क्रीन 60 है। बैको लोडर उसमें फीड करता है, फीड करके उसमें जो भी सोयल होती है, सोयल अलग निकल आती है थ्रू कन्वेयर, और जो प्योर कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं और स्टोन रहता है वो क्रशर में चला जाता है। क्रशिंग के बाद डिस्चार्ज कन्वेयर से होता है वो एक वाइब्रो स्क्रीन में चला जाता है। उसमें टॉप डेक जो है हमारा वो 20 mm का रहता है। 20 mm के नीचे जो स्क्रीन लगा हुआ है दैट इज़ ऑफ 10 mm, इट्स अपर्चर साइज इज़ 10 mm। 20 to 10 mm साइज मटेरियल वहाँ पे कैप्चर हो जाता है और वो कन्वेयर से बाहर आ जाता है। और 10 mm के नीचे सर एक सीव लगा हुआ है, उसका जो अपर्चर साइज़ है वो 3 mm है, तो 3 to 10 mm का जो एग्रीगेट होता है वो वहाँ पे अलग हो जाता है। 3 mm के नीचे सर एक शीट लगा हुआ बेसिकली, उसके नीचे हमें स्क्रीन नहीं चाहिए होती, लेस देन 3 mm इज सैंड, वो बाहर आ जाता है।
Acknowledging the need for regulated management of construction and demolition waste, the Government of India has formulated new laws. Previously, Indian laws permitted the use of only naturally sourced building material. The IS 323-1970, which is the Indian standard specification related to aggregates for concrete, states that these should be sourced from a natural source. Thus, only virgin materials mined directly from nature could be used for government construction. However, after the launch of the Swachh Bharat Mission, the newly formulated Construction and Demolition Waste Management Rules of 2016 have addressed this problem. The new rules shift the onus of waste management onto waste generators and have now allowed the use of recycled materials in new buildings. According to the Construction and Waste Management Rules 2016, the generator of waste is responsible for collection, segregation, and storage of C&D waste. The generator has to ensure that no other waste is mixed with C&D debris. Waste generators who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in a month shall segregate the waste into 5 categories: concrete, soil, steel, wood and plastics, bricks and mortar, and shall submit a waste management plan and get appropriate approvals from the local authority before initiating construction, demolition, or remodeling work. Waste generators also have to pay relevant charges for collection, transportation, processing, and disposal as notified by the concerned authorities. The rules also list responsibilities of the service provider, contractor, local authority, pollution control boards, state government, etc. They also specify criteria for land selection for setting up C&D waste processing and recycling facilities. Time frames have also been given for planning and implementation of the rules under 3 categories: cities with population of 1 million and above, cities with population of 500,000 to 1 million, and cities with population of less than 500,000. Almost all the waste that enters the Burari C&D plant is processed to create new building materials. Byproducts like sand are sold directly into the market. The plant generates no additional waste in its operation. The C&D waste is converted according to its nature into tiles, bricks, and stones for sale. RM60 से 10 mm 20 mm रोड़ी आती है, ये फिर हमारे कास्टिंग पे गिराई जाती है। कास्टिंग में गिराने के बाद में इसमें से फिर 5 तसले सेंट, 3 तसले जीरा रोड़ी 10 mm और 3 तसले ही 20 mm, इसको हम मिक्स करके उसमें डाल देते हैं मिक्सचर में। उसके बाद 2 kg कलर डाल देते हैं। मिक्सचर के बाद में नीचे डाल देते हैं, उसके बाद टेबल पे जाता है। टेबल के पास में मोल्ड लगे होते हैं, उन मोल्डों में फिर भरा जाता है। उसको भर के उसके बाद में इसे पिलाई पे लगाया जाता है। पिलाई पे लगाने के बाद में फिर इसको ढक दिया जाता है। दूसरे दिन आते हैं सुबह मॉर्निंग में, इसको फिर खोलते हैं। The plant also makes curb stones and bricks from the recycled materials of the C&D waste. The durability and strength of these bricks are at par with conventional bricks. कॉस्ट फैक्टर में भी कोई खास अंतर नहीं है और ड्यूरेबिलिटी भी एज गुड एज एनी प्रोडक्ट जो नॉर्मल उससे बनता है। तो जैसे जो टाइल्स वगैरह हैं या ये इनके जितने भी है, इसमें ये भी व्यवस्था है कि जो प्राइवेट कंसेशनर है वो अपनी रेटिंग भी ले सकता है। जैसे ISI की या जो भी रेटिंग इनको मिलती है गवर्नमेंट एजेंसी से, उस रेटिंग को लेकर दे कैन सेल इट टू इवन वी MCD कैन बी ए कस्टमर और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स। तो क्वालिटी और प्राइसिंग में कोई ऐसा विजिबल डिफरेंस नहीं है विज़ाविज़ द नॉर्मल प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट कुछ मायनों में इसकी क्वालिटी बेटर ही बैठती है। As India's economic activity grows, so will its construction and demolition debris.
The challenge for all cities and municipalities is then to create infrastructure to treat and recycle this waste material, which would otherwise be thrown all over the city. Initiative of the erstwhile Municipal Corporation of Delhi and IL&FS in operationalizing and successfully running the Burari plant is testimony to the fact that C&D waste can be recycled and put to good use. It is another step towards achieving India's mission of a Swachh Bharat.